class we discussed some questions. In today's class, even we are going to discuss those questions. जो बच गए हैं questions, we discuss that. And today we are going to revise the gaps model. Gaps जो है basically एक बार मुझे revision कराना था because in last class we discussed about the strategies. What is the service marketing strategies? क्या होते हैं? In today's class we understand about the labeling, branding, and about the customer satisfaction as well. So चलिए शुरू करते हैं class. सिलेबस खत्म हो चुका है, सो नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज रिवीजन वर्क. सो एक बार देख लीजिए, कहीं भी दिक्कत होगा तो फिर हम लोग फिर से एक बार उस टॉपिक को करें. okay. So this was the nature of service. ये जो थे, जो हम लोगों ने VIIP किया था, उसके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे it cannot be produced in anticipation of demand because service can produce at the same time and that will be consumed at the same time. We cannot return the service to the seller once we have consumed that. We cannot return it if we don't like it. We don't have any another option. We can do one thing, like if we are not satisfied, we can complain about it. We can say about it. Yes, good afternoon. But we don't have any right, we don't have any option to return that service, right? But in the case of the product, we can do it, right? Once we basically purchase एक बार परचेज कर लिया अगर हम लोगों ने क्या चीज, आपका सर्विस जो एक बार कंज्यूम कर लिया, तो वी कैन नॉट रिटर्न इट टू द सेलर, बट इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट वी कैन रिटर्न इट. ओके, द नेक्स्ट वन इज the time utility is crucial because in the service market, in the service, we can say that time is the important thing. Tangible item वगैरह को हम स्टॉक करके रख सकते हैं, कार वगैरह को स्टॉक कर लेंगे, कुछ मंथ तक कर सकते हैं स्टॉक, फिर आफ्टर दैट वी कैन सेल इट टू द बायर. बट इन द केस ऑफ द सर्विस वी कैन नॉट डू इट. लाइक कोई भी अगर कस्टमर जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर उस आइडल बैठा हुआ है, तो दैट कैन बी द टर्न इनटू लॉसेस फॉर द फॉर एवर. मतलब उस समय के लिए क्या, मतलब उस टाइम के लिए वो पूरा ही लॉस है. But in the case of the product, if that is not able to, we cannot able to sell it, we can sell it after few months, right? But the service is something where we have to be very much crucial toward the time utility. मतलब time को utilize करना, that is very much important aspect of the service. No ownership can be transferred. Obviously, we cannot transfer the ownership because that service is something जो basically service provider cannot provide the ownership of that knowledge. They cannot give the अपना mind निकाल के, he cannot able to sell it, right? So whatever he is doing at that was the prompt thing. मतलब तुरंत की चीजें हैं, वो जो भी बता रहा है, समझा रहा है, but he cannot transfer the ownership because the service is related with the knowledge and skill. Next one, everyone turn on your camera. Okay, so direct channel, why I am explaining this all, because after that we are moving toward the next question. Direct channel is something where we don't have anything like we can use the mediator, like in the product and products, what we can do, in goods, what we can do, we can use the mediator like wholesaler and retailer for supplying the service. But in the case of this for supplying of the product, sorry, in the case of the service के केस में हम लोग डायरेक्ट चैनल को यूज करते हैं, क्योंकि जो पर्सन सर्विस प्रोवाइडर है वही सर्विस देगा, कोई बीच में मेडिएटर अवेलेबल नहीं होता है इसलिए. ठीक है. One is need of the personal interaction. The service is totally dependent on the people. लोगों पे dependent है service. So कहीं ना कहीं there is a required of the personal interaction between the service provider and the consumer. So this was the basically nature of the services. ये question आया हुआ एग्जाम में, तो इसको लिख लेना, बाकी ये नोट्स तो एक बार कंप्लीट हो जाए तो फिर प्रोवाइड करना ही. How important is it to understanding the consumer behavior in the marketing of service? This question is also raised. क्यों जरूरी है consumer behavior को समझना marketing में?
सो एक नॉर्मल टर्म में अगर हम लर्न करें इस चीज को, तो हम लोग सबको पता है कि हाउ व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द सेल्स, फॉर कस्टमर्स लॉयलिटी, फॉर वी कैन से फॉर ब्रांड लॉयलिटी, फिर माउथ पब्लिसिटी, इन सब चीजों के लिए कौन सा प्रोडक्ट कैसा सर्विस प्रोवाइड करना चाहिए, इस चीज को समझने के लिए वी रिक्वायर द कंज्यूमर, वी रिक्वायर टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक है, सो मार्केटिंग और कंज्यूमर बिहेवियर क्यों इंटररिलेटेड है? बिकॉज नाउअडेज द पीपल, द कंपनीज आर टोटली बेस्ड ऑन द मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट में टोटली बेस्ड है मार्केट, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर एंड फॉर दैट देयर आर सो मेनी काइंड ऑफ मार्केट रिसर्च वगैरह होता है। बट इन द केस ऑफ द प्रोडक्ट, उस चीज को एंटिसिपेट करना, प्रैक्टिकली उस पर काम करना, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट इन द केस ऑफ सर्विस इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट, और वी कैन से दैट इज कॉम्प्लेक्स, राइट? तो अब यहाँ पर मार्केटर्स जो हैं उनके लिए आइडेंटिफाई करना मार्केट सेगमेंट को, मार्केट कैंपेनिंग करना, अट्रैक्ट करना अटेंशन को, स्टडी करना कंज्यूमर बिहेवियर को, उसको इम्प्रूव करना, it is little bit difficult, and for that we need a deep knowledge about the buying behavior of the consumers। ठीक है, तो किस किस चीजों के लिए जरूरत होता है कंज्यूमर, मतलब किस किस टर्म में कह सकते हैं, कौन कौन से बेसिकली पॉइंट्स, मतलब डिसीजन मेकिंग एंड ऑल, कौन कौन से रीजंस हैं जिसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करना चाहिए। तो वो है आपके, पहला है डिसीजन मेकिंग के लिए, डिसीजन मेकिंग फॉर हूम, डिसीजन मेकिंग फॉर द मार्केटर्स, मतलब मार्केटर्स किस तरीके से डिसीजन लेंगे। कंज्यूमर का बिहेवियर अगर आपको नहीं पता है इन केस, तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे वांट। ठीक है, अब जैसे मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में वारंटी और गारंटी मिलता है, दैट इज नॉट अ प्योर सर्विस बट टैंजिबल के साथ तो सर्विस है। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वी आर पेइंग 50K 60K फॉर दैट, एंड इफ वी आर नॉट गेटिंग द वारंटी गारंटी एंड सर्विसेज, वी आर नॉट सेटिस्फाइड, राइट? हम सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि अगर एक दिन के बाद भी वो प्रोडक्ट खराब हो जाता है, सो इन दैट केस ऑब्वियसली हमारा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। सो दैट्स व्हाई द सर्विस इज रिक्वायर्ड इन दिस। ठीक है, तो हर एक सेक्टर में सर्विस का एक अपना रोल होता है, आइदर दैट इज इन द बेसिकली कह सकते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें हो या फिर प्योर सर्विस हो। ठीक है, सो डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीजें आएंगी? एक मिनट, सब लोग कैमरा ऑन करो, जरा कैमरा ऑन करो, एवरीवन टर्न ऑन योर कैमरा, कैमरा ऑन करो, सब लोग कैमरा ऑन करके बैठो क्लास में, नहीं तो क्लास से जाओ बाहर, जाओ क्लास से बाहर जाइए, ज्यादा बेहतर है मेरे लिए। कैमरा ऑन करके बैठो, टर्न ऑन योर कैमरा। चलिए, सो डिसीजन मेकिंग की अगर हम बात करें, तो एक कंज्यूमर का जो थॉट प्रोसेस है, जो उनकी बाइंग बिहेवियर है, ठीक है, मतलब इसको समझना जरूरी है, और कंपनी के लिए डिसीजन लेने में आसानी होगा रिलेटेड विद द सर्विस, दैट व्हाट काइंड ऑफ सर्विस वी हैव टू प्रोवाइड देम। सो मार्केटर्स वांट टू ट्राई टू टैप इनटू व्हाट कंज्यूमर्स टिक as they ponder their choices and learn just the types of things lead to the final decision, like what kind of service they want. In short, we can learn this, like decision making के लिए company जो है कैसे decision लेगी about the service, that what kind of service they require to customers. प्रोडक्ट यूज एंड कॉम्प्लीमेंट, कंज्यूमर किस तरीके से, हाउ कंज्यूमर्स यूज करेगी प्रोडक्ट को, कॉम्प्लीमेंट्स आइटम्स को। ठीक है, सो फॉर दिस we have to understand that what kind of product design is required. If we are basically dealing in the service sector, but that is not the core service, we also need to take the help of the product as well. So what kind of product use, what kind of complementary product we can provide with the services, right? So what kind of product we have to design, so and what how we can develop the product to attract or for influencing the customer. So for decision making within the organization or within the market, it is required, and for basically understanding that what kind of product design is required for the customer satisfaction and for influencing the customer. This is one, the second point. The third point is the environmental influences. We can say that the psychology of the customers, that what kind of thinking they have regarding to the product, regarding to the services, what kind of attitude they have, what kind of purchasing pattern they have. Literally, the good quality of service is required for them, how they are satisfied, right? So, and what kind of culture, background, family they have. So सबको पता है that these are the factors which lead to change the consumer perception and behavior. The factors
फैक्टर्स मैंने बताया था आपको, सोशियो फैक्टर्स, कल्चर फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स, है ना, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड ऑल। सो यहाँ पर बेसिकली कल्चर, फैमिली, किस तरीके के एडवर्टीजमेंट से, मीडिया से दे आर गोइंग टू इन्फ्लुएंस, हाउ दे आर गोइंग टू मेक अ चॉइस ऑफ द प्रोडक्ट, सर्विसेज। सो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस को समझने के लिए, कंज्यूमर के परचेजिंग पैटर्न को समझने के लिए, इट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर. What is consumer behavior? It is a study where we can understand, this is a study, or we can say it consists of so many activities to understand that how we can make the consumer satisfied, as well as we can understand their purchasing pattern, कह सकते हैं किस तरीके से चूज करते हैं, खरीदते हैं सामान को, उसको समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को पढ़ना बहुत जरूरी है. सो दीज आर द रीजंस फॉर, कह सकते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है. डिसीजन के लिए जरूरी है, डिसीजन हम कैसे बनाएंगे रिलेटेड विद द पॉलिसीज फॉर द सेकेंड, प्रोडक्ट किस तरीके से डेवलप करें. तीसरा, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस क्या है, मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं. कंज्यूमर को नॉलेज कितना है, हाउ नॉलेजेबल द कंज्यूमर आर. वी ऑल नोज दैट इफ वी आर टेक द एग्जांपल ऑफ द रूरल कंज्यूमर एंड द अर्बन कंज्यूमर, वी ऑल नोज दैट रूरल consumers are less knowledgeable as comparison to the urban consumers. So what we can say that if the consumer are knowledgeable, they are more rational. What does it mean? That they have mind, means कह सकते हैं दिमाग होगा उनके पास, choose the product. They are not basically based on the emotional factor, but they are rational. ठीक है, तो कंज्यूमर कितना नॉलेजेबल है. इफ द कंज्यूमर आर नॉलेजेबल, ठीक है, एंड नाउ अ डेज फॉर द अवेयरनेस एंड नॉलेज दे हैव मल्टीपल मीडियम to get the knowledge, like social media के through, Insta के through, blogs के through, contents, YouTube videos and all. So we can say that consumer को कितना knowledge है और कौन सी consumer जो है इस product को use करेंगे, मतलब कौन potential consumer है, इसको जानने के लिए भी consumer behavior को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब यहाँ पर एक टर्म दिया है कि मतलब सोशल अवेयरनेस इज आल्सो द फैक्टर, मतलब एक सोशल अवेयरनेस, समाज में जो जागरूकता जो है, जो आप कह सकते हैं, और किस किस थ्रू ये नॉलेज बनता है, एडवर्टीजमेंट, प्रमोशन के थ्रू, सोशल कंटेंट्स एंड ऑल. एंड वी कैन से दैट द कंज्यूमर अवेयरनेस एंड नॉलेज जो है वो बेसिकली आपको हेल्प करेगा फॉर डेवलपिंग द मार्केटिंग कैंपेन एंड फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. ठीक है, मोटिवेशन इज समथिंग लाइक, मोटिवेशन का मतलब क्या हुआ कि आपके जो कंज्यूमर्स हैं वो कितना मोटिवेटेड हैं प्रोडक्ट के लिए, सर्विस के लिए. ठीक है, मतलब पॉजिटिव वे में वो आपके प्रोडक्ट के लिए क्या सोचते हैं. ठीक है, तो कंज्यूमर को मतलब मोटिवेटेड कितना है, एंड हाउ वी कैन मोटिवेट द कंज्यूमर फॉर परचेजिंग द सर्विसेज ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, so we can do, and one more thing is the social media marketing. Obviously we can use the social media because more than 80% people, they are using the social media. They are basically invest their more of the time on internet. So for these purpose, the social media marketing is one of the factor for influencing the consumers, as well as to understanding the consumer behavior, how they are giving the feedback about the services. For example, if we are purchasing any kind of thing, either if we are taking the services as well, we'll see the so many feedback as well. So we can say, like, we can do why it is required to understand the consumer behavior for decision making, for product and content, for motivations, for social media marketing, and for the consumers, for understanding the consumer knowledge and how the consumer behaviors are influenced because of the environmental reasons. ठीक है, तो ये सारे आपके आ जाएंगे. क्यों जरूरी है कंज्यूमर के बिहेवियर को समझने के लिए. Why it is required and important to understand the consumer behavior in marketing. So how we can learn it, like for understanding the consumer knowledge, to understanding the consumer perception, for making the marketing campaigns, for product designing, for understanding the influence of the social media. ठीक है, for motivation of the consumers. So for all these factors we require to understand the consumer behavior. समझ में आया सबको? Everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, next point. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज इट रिक्वायर्ड. और एक चीज और, जरूरी नहीं है कि जो मैं दिख रहा है वही याद करना है, जरूरी नहीं है. यू कैन यूज योर कॉमन सेंस एज वेल.
that why it is required to understand the consumer behavior. Obviously, for making the marketing campaign, for decision making, for the company's policy, for the product designing, for understanding the customer perception, for motivation, for the social media marketing, मतलब उनको किस तरीके से हम influence कर सकते हैं, ठीक है, for the customers feedback, ठीक है, for the response of the customers, customer का response कैसा है product के लिए, service के लिए, फीड पॉजिटिव कस्टमर्स कितने, नेगेटिव कस्टमर्स कितने हैं, आपको किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है आपके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, इन सब के लिए कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। यानी कि आप कह सकते हो वी नीड टू अंडरस्टैंड द कंज्यूमर बिहेवियर बिफोर लॉन्चिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज इन द मार्केट एज वेल एज आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इन द मार्केट। मींस इन द बोथ कंसेप्ट वी नीड, मतलब प्री अप्रोच में भी जरूरत है, पोस्ट अप्रोच में भी जरूरत है कंज्यूमर बिहेवियर को समझ। क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट? Okay. Now the question is, why is it important to measure and monitor the customer satisfaction and service quality? Customer satisfaction को monitor करना और service quality को monitor करना, measure करना क्यों जरूरी है? So obviously हमें पता है इसमें भी कुछ points है. For making the quality norms, we can make the quality norms. कस्टमर सेटिस्फैक्शन भाई कस्टमर रिटेंशन के लिए, कस्टमर लॉयल्टी के लिए, ये सब के लिए तो जरूरी है। साथ साथ में व्हाट वी कैन डू, वी कैन मेक सम क्वालिटी एंड द नॉर्म्स पॉलिसीज इन द कंपनी, ठीक है। वी नीड टू चेंज, व्हाट नीड टू चेंज इज कुछ क्वालिटी मॉनिटर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स है, मतलब वी हैव टू लिसन द कस्टमर्स, जो मैंने आप लोगों को पहले भी करा रखा है। हाउ वी कैन, मतलब भाई वी हैव टू लिसन टू द कस्टमर्स, मॉनिटर द इंटरेक्शंस, ठीक है, and capture the customer feedback channels, ask the customer what they think, use quality monitoring agents वगैरह evaluate करना, do not, मतलब obviously ये सारी चीजें करवा रखा है, तो इसलिए एक बार एक लाइन बता रही हूँ। Measure the result and keep track of the continuous feedback, progress report, data analyze करना, CRM softwares कुछ upload करना, software वगैरह we can use. So all these are the part of the why we need to understand the service quality and customer satisfaction, why we need to monitor and listen. What are the steps for choosing the target market segmentation? That is already done in the class. हो चुका है। एक क्वेश्चन है व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ टारगेट मार्केटिंग, तो ये एक बार मैं बता देता हूँ। चूजिंग द टारगेट मार्केट, आई गेस स्टेप्स तो मैंने करवा दिया, तोशी करवा दिया है ना, ठीक है। ये क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द स्ट्रैटेजी ऑफ टारगेट मार्केटिंग। सर्विस क्वालिटी मैंने इसमें थोड़ा शॉर्ट में इसलिए बताया है क्योंकि अभी मैं गैप्स मॉडल कराऊंगी ना, तो सर्विस क्वालिटी, सर्विस सबको लेते हुए पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। टारगेट मार्केट का मतलब क्या होता है? टारगेट मार्केट इज समथिंग व्हेन वी सेगमेंट द मार्केट, देन वी सेलेक्ट द पर्टिकुलर मार्केट और वी कैन से द होल मार्केट टू ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, ठीक है। जिसमें मैंने आप लोगों को 4 अप्रोच बताया था, याद होगा टारगेट मार्केट में, अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, फिर नीश और एक लोकल और माइक्रो, राइट। सो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे टारगेट मार्केट की कैसे, वी हैव टू सेलेक्ट एंड एमिंग द मार्केटिंग एफर्ट करेक्ट द टारगेट मार्केट फॉर प्रोडक्ट विद हेल्प इट सक्सेस, मतलब वी हैव टू टारगेट द मार्केट। व्हाई वी नीड टू टारगेट द मार्केट? बिकॉज एवरी कस्टमर इज नॉट आवर कस्टमर, राइट। हर एक कस्टमर हमारा कस्टमर नहीं है, हम सबको प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकते, तो वी हैव टू एनालाइज दैट, एंड फॉर दिस कंसेप्ट वी नीड टू टारगेट द मार्केट। यहाँ पर कुछ टाइप्स ऑफ मार्केट्स भी दिए हुए हैं। प्राइमरी टाइप्स ऑफ मार्केट्स कौन कौन से हैं आपके? कंज्यूमर मार्केट है जिसमें हम कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल करते हैं, इंडस्ट्रियल मार्केट जो इंडस्ट्री रिलेटेड सेल करते हैं, सीमेंट रिलेटेड, मशीनरी वगैरह, इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स है, ठीक है, एंड कुछ रीसेलर मार्केट जिनमें हम होलसेलर जो रिटेलर को सेल करता है प्रोडक्ट, पहले खरीदता है मैन्युफैक्चरर से, फिर होलसेलर के पास आता है, फिर रिटेलर को सेल करता है, तो लाइक रीसेलर मार्केट्स आर देयर। So we can say that there are the primary types of markets कौन-कौन से हैं? Consumer market, industrial market, institutional market, reseller market। यार पता नहीं उन्होंने concept क्यों दिया है, it doesn't require, but still लेकिन थोड़ा types of market अगर आया है तो इसको पढ़ लो। पहला है कंज्यूमर मार्केट, ऑब्वियसली जहाँ पर इंडिविजुअल्स लोग, हाउस होल्ड्स, पीपल जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं, कंज्यूमर मार्केट। लाइक जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में प्रोडक्ट खरीदते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ द कंज्यूमर मार्केट, ठीक है। प्रोडक्ट को खरीदते हैं और खुद ही कंज्यूम करते हैं, मतलब अपने यहाँ खुद यूज करते हैं, उसको रीसेल नहीं करते हैं, तो दैट इज कंज्यूमर मार्केट। क्लियर हो रहा है कंज्यूमर मार्केट क्या होता है? ठीक है, ये थोड़ा सा ये टॉपिक इसीलिए करवा रही हूँ क्योंकि इसी वाले से बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं। कल को क्वेश्चन एक्सटर्नल में अगर आ गया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मार्केट तो दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा करवा दूँ।
कंज्यूमर मार्केट क्या होता है, क्लियर हो गया? कंज्यूमर मार्केट में कौन होंगे, इंक्लूडिंग आपके कौन कौन होंगे, इंडिविजुअल्स होंगे, हाउस होल्ड्स होंगे, जो खरीदेंगे प्रोडक्ट को, कंज्यूम करेंगे गुड्स को, सर्विस को, अपने पर्सनल यूज के लिए प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करेंगे। यहाँ पर दे आर नॉट इंटरेस्टेड फॉर रीसेलिंग द प्रोडक्ट एंड दे आर नॉट सेटिंग देमसेल्व्स अप एज द मैन्युफैक्चरर, मतलब खुद मैन्युफैक्चरर को ना, मतलब कोई रीसेल का कंसेप्ट यहाँ नहीं चलता, ठीक है। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल मार्केट में ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, लोग होंगे जो उनके लिए काम करते हैं, यानी दूसरे बिजनेस वगैरह में काम करते हैं, वो प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, सर्विस को खरीदेंगे, लेकिन अपने बिजनेस के लिए यूज करने के लिए, ठीक है, ना कि उसको कंज्यूम नहीं करना होगा, उसको किसी फिनिश प्रोडक्ट, मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉच बनाता है तो उसके अंदर की जो बैटरी है, अगर कोई एक कंपनी दूसरे कंपनी से क्यों लेगी, एक बैटरी बनाने वाली कंपनी वॉच बनाने वाले को क्यों देगी, क्योंकि वो प्रोडक्ट को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए यूजफुल है। सो इन शॉर्ट व्हाट वी कैन से दैट द इंडस्ट्रियल मार्केट में क्या होंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, द पीपल और द ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट परचेजिंग द प्रोडक्ट फॉर देयर कंजप्शन बट फॉर देयर बिजनेस पर्पस, ठीक है। अब एग्जांपल में वही है कि स्टील हो गया आपका, फिर आपका सॉफ्टवेयर हो गया, द वन कंपनी इज परचेजिंग सॉफ्टवेयर फॉर यूटिलाइजिंग इट इन देयर ओन आईटी कंपनी, सो दैट इज द पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल मार्केट where we can take the product or services from the another company to utilizing it in their own company or business. Institutional market में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके वैसे मार्केट्स हो जाएंगे that is based on the both kind of thing, that is based on the profit and that is also based on the non-profit. Industrial market is something B2B, business to business, मान के चलो वो वाला क्या था, B2C, business to consumers, consumption. Institutional markets are something that is totally based on the profit and non-profit institutions. And what they can be the hospitals, they can be the churches, government agencies. तो यहाँ पर आपके चर्च हो गए, टेम्पल हो गए, मॉस्क हो गए, फिर आपके मतलब obviously मतलब ये जो भी आपके basically places हैं, that is not for the profit purpose, right? This is for the religious purpose and that is for the non-profit. वहीं अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो some government hospitals are not for non-profit and the private one is for the profit. So the institutional market is totally based on the profit purpose. It's not about the consumption but it is totally about the profit. किसको कैसे हम पैसे को earn करें. Private one, they are basically more indulged toward the income and profit. And the next, आपका जो दूसरा है वो क्या है, आपका non-profit, that is for the social welfare and that is a kind of the facility which is provided by the government for free of cost, right? Reseller markets are basically they are intermediaries. वो intermediaries होते हैं जो मैंने आपको बताया था, wholesalers, retailers, mediators, sales, फिर agents and all. ये intermediaries क्या करते हैं, they buy the finished or the semi finished product, resell them for the profit and they are the basically they are the part of the reseller market. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ मीडिएटर होंगे वो प्रोडक्ट को सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट को या फिनिश्ड प्रोडक्ट को खरीदेंगे और उनका सिर्फ एक ही काम होगा उस प्रोडक्ट को बाहर आगे चल के सेल कर देना। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि जैसे कॉटन है, कॉटन का जो थान है हमने खरीद लिया, सेमी फिनिश्ड हुआ वो, क्योंकि कॉटन का जो थान है यानी वो कपड़े में कन्वर्ट हो चुका है, स्पिन होके वीव होके, राइट। अब वो मेरे पास आ गया, now I am selling, now I am making clothes from that and I am again selling it to the market. So in this case, in the reseller वाले market में we can use both kind of product, semi product as well as the semi finished product as well as the finished product, but the main purpose is not the consumption but resell it again, ठीक है, वापस से इसको रीसेल कर देना। अब ये काम होलसेलर्स भी करते हैं, जैसे कि आपसे प्रोडक्ट एक बार में ले लिया होलसेल रेट में, उसके बाद फिर रिटेलर को थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में सेल करते गए। So what we can see that the reseller market is something that are not purchasing the product for their own consumption, but that is for the reselling it to the another party. ठीक है, yes अक्षय, yes अक्षय। मैम रेलवे वगैरह किस में आ जाएगा? रेलवे वगैरह आपके इंस्टीट्यूशनल मार्केट में आ जाएगा, ठीक है। ओके। तो अब आपकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था, शायद आप लोगों को याद होगा, मास मार्केटिंग, अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग,
मास मार्केटिंग का रीजन क्या होता है बेसिकली? ठीक है, देखो आप लोग का मार्केट सेगमेंटेशन दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द सिलेबस बट द क्वेश्चन वाज आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक, सो आई जस्ट नीड टू टेल यू these points as. So what is the strategies for reaching the target market? The mass marketing is something where our main reason we have to cover the whole market. The coverage of the market will be large. Okay, like we are not going to basically think about this segmented part. We are not going to think about this segmented part, but we have to think about this whole market. That is the mass marketing. Here we have our main reason is to cover the mass consumer, mass production, and mass selling. Like प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बनाओ, प्रोडक्ट को सेल करो, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाओ. ठीक है, यहाँ पर जो बेसिकली रीजन क्या होता है मार्केट मास मार्केटिंग का, कि यहाँ पर हर एक पूरे मार्केट को एक ऑफर मिलेगा. वन ऑफर इज गिवन या वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस, one kind of product and service is going to offer to the whole market. That is not going to change according to the reason and according to the segment, but we are going to provide the same one product or one service to the whole market. The quality of the product, the price of the product might be possible that the price of the product can be changed. It might be possible, but the main reason of the providing this one type of product and one type of service is required to scale in this market. Telling earlier, now the Coca-Cola is also using the same concept of the mass marketing, but nowadays they are also moved for the segmented marketing because they offer the diet Coke and all. You all knows about it, I guess. सबको पता होगा ये चीज के बारे में. So earlier that was basically based on the mass marketing. Next. Why they are basically in the mass marketing concept में एक चीज बहुत अच्छा क्या है that the risk was very low. Risk low क्यों होगा? Because आप एक ही प्रोडक्ट सारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हो. ऐसी सिचुएशन में पॉसिबिलिटी है कि आपका जो कॉस्ट होगा, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गया. एडवर्टीजमेंट कॉस्ट आप एक प्रोडक्ट के लिए कितना करोगे, है ना? अब जैसे कोई कंपनी जिसके पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स, दे हैव टू एडवर्टाइज फॉर द मल्टीपल प्रोडक्ट्स. But in the case of the only one product or service, you don't need to advertise a lot. So we can say that the cost is comparatively low. Mass marketing में cost जो है वो low है. Risk segmented marketing की comparison में low. Not in the overall concept, because it might be possible that the particular product and service is not able to satisfy every customer, but they want to offer only one product. So that is the mass marketing. Second one is differentiated marketing. I guess सबको clear ही होगा what is the differentiated. Something there we have to offer the different product in the different segment. ठीक है? Different product in the different segment. So that is differentiated marketing where the separate offering, a separate kind of things, separate kind of offer is there for the different type of customers, whatever their need is. Like in the case of the product, we can say, like if someone is suffering from the cavities, we'll get the toothpaste Sensodyne, right? Or if someone is facing the any problem with the teeth, maybe it is possible that the demand from the normal toothpaste is for demand alag hoga, right? So here we are going to target each and every segmented group and we will provide the different offer to satisfy their needs. So we can say multi-segment, differentiated marketing and segmented marketing, right? The concentrated marketing where we have to define or target a very one segment only, मतलब जहाँ सिर्फ एक segment पे ही ध्यान देते हैं और एक ही segment पे बस हम focus करेंगे. Product जो है एक ही segment को provide करने की कोशिश करेंगे. Niche marketing जो है ना, ये सबसे ज्यादा beneficial माना जाता है. क्यों? क्योंकि इन द फॉर द न्यू कंपनीज, जब न्यू कंपनीज मार्केट में एंटर होती है, तो जैसे कैसे ओला आई थी तो सबसे पहले एक ही एरिया में थी, दैट वाज ओनली इन द बैंगलोर, राइट? व्हेन द उबर केम, दैट वाज ओनली इन दिल्ली. So what we can say that they are targeting the only one segment or one area that is totally dependent on the demographic, geographic, जिस हिसाब से भी वो अपना करें. So like in short what we can say that the niche marketing और concentrated marketing जो है risk के मामले में बहुत कम है, क्योंकि आप सारे कस्टमर आपके टारगेट कस्टमर्स है ही नहीं, तो आप सबको प्रोडक्ट पहुंचा भी नहीं रहे, तो प्रोवाइड भी नहीं कर रहे. So concentrated marketing where we are defined and we have specific segment of the consumer population. ठीक है?
So यहाँ पर niche marketing and concentrated marketing are same. I don't know why they are differentiated, but in the alternative terms, that is used for each other. I think there is no local market. So local market or individual market are something which is within the niche marketing. Like जैसे पटना अगर हम ले ले तो that can be the one segment, but within the Patna if there is different areas, for example the Boring Road, example the Patliputra, right? So that is a individual market. जहाँ पर जैसे boutique अगर किसी ने start किया तो they first want to sell it in the local areas. Not they are not going to sell that product in the mass marketing approach. They are not going to use. But what they can do, they can first compare. They can first try to sell the product in the local areas only. So what we can say that is the individual or local, individual or micro market. Next one, branding and packaging of the services. What is branding and packaging of the services? What is brand? What is brand? Anyone? Brand क्या होता है? What is brand? हम किसी प्रोडक्ट का कुछ अच्छा इमेज बन जाना, जैसे कोई कंपनी आई उसका बहुत अच्छा इमेज बना दी तो वो ब्रांड बन गया. ब्रांड इज समथिंग विच इज वैल्यूएबल, किसी चीज का जिसका वैल्यू हो, जिसकी इक्विटी हाई हो, ठीक है, जिसमें हम कुछ वैल्यू ऐड कर दें. अब ये जो ब्रांड हो सकता है वो कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, कंपनी का लोगो हो सकता है. दैट इज अ ब्रांड. दैट इज द वे with which मतलब किसके जिसके जिसको देखकर we can able to recognize or we can able to identify that which company is this, right? So brand जो है वो एक तरीके का एसेट होता है कंपनी के लिए. अगर वो लॉन्ग टाइम से वो चला आ रहा है या तो उसका मार्केट में गुडविल बहुत ज्यादा हाई है. If you are providing the proper customer satisfaction and loyalty, customer loyalty is there, it means that your brand equity यानी कि brand value is increase. Already आपका brand value increase है और वो increase ही करेगा. वहीं अगर आपके customer satisfied नहीं होंगे, that is going to impact on the brand and the brand equity will be reduced, कम हो जाएगा. So here brand is something which will help the consumer to expect from the company, which will help the consumer to stick या फिर हो सकता है loyal with the company, and that is help you to feed on the company. ठीक है, तो इन सारी चीजों के लिए हम कह सकते हैं कि आपका ब्रांड जो है ये काम करता है. ठीक है, that is a good one. अब जैसे एग्जांपल में अगर if we are thinking about Bajaj, what kind of thinking we have, right? क्या थिंकिंग होगा बजाज सुनते के साथ? बहुत पुरानी कंपनी है ना, स्कूटी भी उसकी आती थी, स्कूटर आती थी आई गेस, है ना, बजाज प्रिया नाम था उसका. सो है ना, तो एंड इफ वी आर कोई भी और ब्रांड जैसे कि व्हेन वी हर्ड अबाउट द KFC, व्हेन वी हर्ड अबाउट द मैकडी, व्हेन वी हर्ड अबाउट द Fortis, व्हेन ऑल काइंड ICICI, व्हेन वी हर्ड अबाउट ICICI, व्हेन वी हर्ड अबाउट द HDFC, we have the different perception for the different brand. It might be possible that every image of every brand is like positive, but that is not with the same scale. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि वैल्यू, ब्रांड इज समथिंग व्हिच इज अ वैल्यू ऑफ द कंपनी. अब जैसे मैगी का ब्रांड वैल्यू देखो कि व्हेन वी आर परचेजिंग द नूडल्स ऑफ पतंजलि बट वी आर सेइंग मैगी देना, right? So that is the brand value where we are not able to understand that noodles is something different, but Maggi is the brand. That is not the product, but that is the brand. So we can say that brand is a value, okay, through which the consumer are able to expect from, they can able to perceive, okay, and how we can increase the brand equity. We can increase the brand equity by fulfilling the customer expectation, by providing the good quality of the product, timely and efficiently we are delivering the product and services. So all these are reasons for increasing the brand, ठीक है, brand equity. ऐसे ब्रांड बहुत बड़ा है, ब्रांडिंग समझना इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. इसमें तो बहुत सारी चीजें आपके आ जाएंगी. तो ब्रांड डेवलपमेंट कैसे होगा, ब्रांड एक्सटेंशन कैसे होता है, फिर ब्रांड rejuvenation, what is brand rejuvenation, what is brand flanking. So there are multiple terms in brand, so I am not going to elaborate every point, but if you all say, then एक दिन करेंगे ब्रांड पे क्लास, ब्रांडिंग पे. चलिए थोड़ा सा पैकेजिंग देख लेते हैं. खैर इसको देखने की जरूरत है, ऐसे ही लर्न हो जाएगा. व्हाई द पैकेजिंग इज रिक्वायर्ड.
See, packaging is something which is totally dependent on the product से related होते हैं packaging, है ना? So packaging का क्या काम है? Obviously, it is protected from the sun, spoil होने से, खराब होने से, wastage से, leakage. If something is of the liquid, so it cannot be spilled. For that, we are using the tetra packs, right? Tetra packs वगैरह use करते हैं liquid material के लिए, plastic या proper quality plastic का use करते हैं. Convenience हो, जैसे मान लीजिए कि आप purchasing 1 kg of sugar, then if they are not able to package, मतलब पैकेट में अगर वो नहीं होगा तो it is very much difficult to handle. मान लीजिए ब्रेड लिया और ब्रेड के स्लाइसेस हाथ में दे दिए आपको शॉपकीपर ने, is it okay if we are able to carry it? No. So for the convenience of the customer, packaging is required. For safety purpose, for it is packaging is also for the branding and promotion. Like the logo is there, the name of the company is there, the details are there. So how we can use that product, we can also get that knowledge through the packaging. So labeling is the part of the packaging, we can say, but that is a detailed description and a written form of the branding, yeah, for promotion. Okay, and sometimes the packaging is also for the influencing the customer to purchase the product. Like अच्छा खासा अगर वो बहुत beautiful color वगैरह use किया हुआ तो that is also required. That is also useful for them. So packaging क्या है, labeling क्या है, ये सारी चीजें मतलब जरूरत नहीं है सर्विस मार्केटिंग में, but the question is there, so मैंने एक बार बता दिया. किसी को कुछ पूछना है? The service, ठीक है, सर्विस एंड गुड्स टुगेदर, ठीक है, जहाँ सर्विस को और गुड्स को हम इकट्ठे एक साथ यूज करते हैं. व्हाई? बिकॉज द जो सर्विस है दैट इज नॉट प्योर सर्विस एंड वी नीड द सपोर्ट ऑफ द गुड्स एज वेल. ठीक है, अब इसमें कुछ कंटेंट्स है कोशी, मैं भी आपको भेज दूंगा थोड़ी देर, ठीक है. सर्विस क्वालिटी गैप्स, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं. आप लोग सबको विजिबल है, सब लोग को दिख रहा है? भेज दिया है मैंने, ये आपके पास होगा, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, so what is service quality? Service quality is something that is basically the output of the service delivery system that is totally dependent on the customer satisfaction. If the quality of the service is good, customer will be highly satisfied. If the quality of good your service is not good, not proper, they are not going to satisfy. The service quality is something which is impact on the behavior of the consumer, on their satisfaction, on the nature, or we can say on the purchasing power, मतलब purchasing behavior पे impact डालता है आपका service quality. अगर मैं आज example के लिए, if for example if I am going to the restroom and if I am not able to get the proper product, maybe I am not able to go again, मैं जाऊँ ही ना वहाँ पर, जा ही ना सकूँ, obviously my mind is not going to allow me for go there again. So we can say that the service quality is something that is totally dependent on the output and what kind of output and how we are getting the services, how the service is delivering to the customers. Service gap क्यों आता है? That is a kind of the discrepancy, that is a kind of the वो सकते stress है जहाँ पर आपका जो gap है वो क्यों बन रहा है? Because of the not able to understand the consumer को ना समझ पाना. Within the organization अगर आपका proper system नहीं है, employees properly work नहीं कर रहे हैं, employees expectation और perception को differentiate नहीं कर पा रहे consumer का, then this service gap can be occurred. तभी service gap आ जाता है. Service gap basically आपको कौन सी condition में लेकर आ जाता है? जहाँ पर service failure के chances बहुत ज़्यादा high हो जाते हैं. Service fail होना शुरू हो जाए. Service fail होने का मतलब the quality of the service is getting destroyed. In that case, the service quality is decreasing and the service gap is increasing. This is a discrepancy. This is a kind of stress. Why it has happened? Because the company is not able to understand the customer expectation, customer's perception, or it might be possible that within the organization there is no proper management. ठीक है? Service quality क्या है? तो something where that is between the expected service, क्या service सोचा और क्या service मिला, ठीक है? तो यहाँ पर ये मैंने जो चार्ट बनाया है इसको याद रखिएगा that what the customers expected and the expectation is totally dependent on the amount whatever we are paying, about the trust, कितना trust है हमें brand पे, अगर trust high है, ज़्यादा पैसा पे कर रहे हैं, expectation will be also high. And what we are providing, मतलब what customers are perceiving,
what the customers are getting. That is between like service, if whatever they expected, if they received same thing, then the service quality is higher. Customer will be satisfied, the customer will become loyal. So in the long run, we can say that this service quality matters a lot for the company because we have to retain the customers in the company. किसी भी नए कस्टमर को बनाने का कॉस्ट जितना हाई होता है ना, उससे बेटर है कस्टमर को रिटेन करके रखना. इसी कंसेप्ट में मार्केटिंग चलता है. तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड सर्विस, परसीव्ड सर्विस, सर्विस क्वालिटी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टीज आर इंटररिलेटेड. Expected service and perceived service is something which is related with the consumers. ठीक है? But what service quality we are providing, that is totally dependent on the company. Customers are satisfied or not, that is dependent on the service quality, and the customer will become the loyal, that is dependent on the customer satisfaction. इसको ये समझ आया concept? Expected service, perceived service, customer का mind है, customer का demand है. This is customer's demand, right? Service quality is something which is provided by the company. If the service quality is good, then the जो बाकी के process है, मतलब customer loyalty तक का process चलेगा, otherwise नहीं चलेगा. If the service quality is positive, then the customer will be satisfied. Service quality is not good, customer dissatisfaction, customer unsatisfied रहेगा. ठीक है? So this is something which is related with the service quality. तो ये चार्ट याद रखना. ठीक है? नेक्स्ट इज सर्व वेल. ठीक है? सर्व वेल इज गिवन बाय जेथिमन. ठीक है? परशुरामन के द्वारा 1985 में दिस कांसेप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. एंड इन सर्व वेल देयर इज समथिंग, सर्विस क्वालिटी को हम कहते हैं शॉर्टकट में सर्व वेल, एंड दैट इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू द 5 टूल्स, एंड दैट इज रैटर. द 5 डायमेंशंस जो हैं ये सर्विस क्वालिटी का. रैटर में रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी इज समथिंग व्हिच इज रिलेटेड विद द ability to perform the service accurately. मतलब कोई भी सर्विस अगर हमें प्रोवाइड करना, हम accurately प्रोवाइड करें. The focus should be there. The service will be provided with the first time without error. यानी बिना कोई गलती किए अगर हम सर्विस को 100% accurately प्रोवाइड करते हैं, यानी आपका परफॉर्मेंस कितना अच्छा है, आपकी एबिलिटी कितनी अच्छी है, आप कितने एक्सपीरियंस पर्सन है. यानी कि यहाँ पर जो सर्विस के टर्म में अगर हम बोले तो हाउ मच एक्सपीरियंस द पर्सन इज टू प्रोवाइड द सर्विस, हाउ he or she is performing by providing the service to the customer. They are providing the service without error or there are so many mistakes. अगर बहुत सारे mistakes होंगे तो definitely your performance is not up to the mark, right? So reliability is something that is totally dependent upon the ability of the performance of the company. ठीक है? And without error if you are providing the service. If the error is less, then the service quality is high. If the error is so many errors are there, the service quality is low. Clear हो गया? समझ में आया? Everyone? Next point. Assurance. It is the knowledge and courtesy of the employees and their ability to convey the trust and confidence. ठीक है? मतलब कि एम्प्लॉइज जो हैं उनको क्या करना चाहिए, बेसिकली कॉन्फिडेंस रेज करना चाहिए कस्टमर्स में. कस्टमर्स को बेसिकली सेफ फील कराइए ट्रांजैक्शन के लिए, एश्योरेंस दीजिए, कॉन्फिडेंस दिखाइए, ट्रस्ट दिखाइए, सो दैट द कस्टमर्स आर able to take the decision for consumption of that service, right? And service product खरीदना है, service consume करना, whatever. That for that there should be the assurance, एक convenience, not convenience, बोल सकते हैं ना कि convince कर सकते हैं हम customers को through our trust and confidence. ठीक है? We can raise the trust and confidence in them also for purchasing some particular kind of product. Example के लिए, if I am purchasing this spec, maybe I am confused, I am in dilemma that I cannot able to trust this company. But if there is a customer executive and he will say that ma'am आप please purchase कीजिए, it is like आपकी आंखों के लिए better है, ठीक है, इट्स ग्लास इज बेटर, स्क्रैच फ्री है, फ्लेक्सिबल है, आप एक बार यूज करके देखिए, यू विल फील बेटर. आई थिंक जितना भी आपने स्पेक्स यूज किया होगा उससे बेटर होगा. सो इफ दे आर कन्विंस मी लाइक दिस, इफ दे आर बेसिकली एश्योरिंग मी दैट व्हाटएवर आई एम परचेजिंग दैट इज द राइट प्रोडक्ट और सर्विस, सो दैट इज एश्योरेंस. ठीक है? If the customers are becoming more confident about your product and service, it means that the service quality is good. If that they are not able to, then your service quality is not good, right? Tangible things, it contains the physical facilities, appearance of the personal. The personal का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, basically आपके employees, physical
physical facilities, your sitting arrangements and all, the modern equipments, whatever the visual things which is basically related with the service. Like for example, if we are going to the school and if there is a no proper sitting facility, what the perception we can think that if they have no sitting facility for the parents properly, they are not able to give the facility to our children as well. So what we can say that the tangible support is always there with the service. If the tangible support is able to satisfy the customer, it means that if you are providing a good quality of service, greeting, normal refreshments and all these things are there, then definitely your service quality is good. Next one is empathy. It's related with the care. What I said that एक बार मैंने आप लोगों को ये concept शायद बताया भी था कि like if the company is only for the profit purpose, see the main reason is only selling, right? Product को sell करना, but अभी इतना कंपटीशन बढ़ चुका है हर एक सेक्टर में. अगर मैं बोलूं तो सबसे पहले ओला आया, उसके बाद उबर, फिर रैपिडो एंड आई थिंक कि मल्टीपल कैब सर्विसेज आते हैं ना, है ना. तो सर्विस सेक्टर भी कंपटीशन से अलग नहीं है, बहुत सारा कंपटीशन इंक्रीज हो चुका है. डिस्टिंक्ट के लिए हम क्या करते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं. उसी में एक चीज आता है एम्पैथी, लाइक वी हैव टू केयरफुल फॉर द कस्टमर्स एज वेल. Whatever products and services we are providing, we have to be careful by providing that service. ठीक है, अटेंशन होना चाहिए फॉर्म का कस्टमर के लिए. ठीक है, कन्वीनियंट होना चाहिए उनके लिए बिजनेस आवर्स. कस्टमर के बेस्ट इंटरेस्ट जो है वो हम दिल से चाहते हैं, इस तरीके का आपको ये बताना पड़ेगा कस्टमर. ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस इज समथिंग वेयर विलिंगनेस टू हेल्प द कस्टमर, like how much responsive we are. Like being a customer executive, if I'm not responsive, if someone is asking कि मैम प्लीज हेल्प मी इन दिस, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि मुझे प्लीज ये प्रोडक्ट में बताइए, एंड इफ ही और शी इज नॉट रिस्पॉन्सिव, दैट इट मींस दैट सर्विस क्वालिटी इज नॉट गुड. दे आर नॉट गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दैट व्हाटएवर यू वांट, दे आर नॉट गोइंग टू से, दे आर नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन दैट. सो रिस्पॉन्सिवनेस आपका कैसा है, कस्टमर्स की हेल्प करने के लिए हमेशा आप क्या रहिए, बेसिकली विलिंगनेस होना चाहिए, हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार, राइट. सो और आप तुरंत से उनको सर्विस प्रोवाइड कीजिए, कस्टमर्स की इंक्वायरीज को पढ़िए, रिस्पॉन्ड कीजिए. सो रैटर इज समथिंग व्हिच इज एबल टू डिटरमाइन द सर्विस क्वालिटी. ठीक है, एश्योरेंस, आर से रिलायबिलिटी, एश्योरेंस, टैंजिबिलिटी, एम्पैथी एंड आर से रिस्पॉन्सिवनेस. तो इसको हमेशा याद रखिएगा. क्लियर है. द नेक्स्ट पॉइंट इज द गैप्स मॉडल. गैप्स मॉडल क्या है आपका, दैट वाज firstly that was introduced by the Parshuraman, Valerie Jethimal and Leonard L. Berry. 1985 में आया. गैप मॉडल जो है दैट इज हेल्प, एक कंपनी को हेल्प किया इसने किस चीज के लिए, कि कस्टमर को हम सेटिस्फाई कैसे कर सकते हैं, और कस्टमर अगर हमारा प्रोडक्ट या सर्विस को यूज नहीं कर रहा है तो उसका क्या रीजन हो सकता है, हमारे तरफ से क्या प्रॉब्लम है. तो इन सारे क्वेश्चन के आंसर्स के लिए गैप मॉडल को एनालाइज करना बहुत जरूरी था. और इन सर्विस इंडस्ट्री जो गैप मॉडल है ये बेसिकली यूज होता है बिकॉज ऑफ द वेरिएबिलिटी. ठीक है, बिकॉज टू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी कैन डिलीवर द सर्विस टू द पोटेंशियल कस्टमर. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रोड मैप. ठीक है, इट इज अ काइंड ऑफ रोड मैप that is basically for providing the service, for increasing and improving the service delivery process. ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल में अगर कोई पर्सन फेल होता है एग्जाम में भी, एग्जाम ये आप लोग के लिए नहीं है, एग्जाम्पल में भी फेल होता है, then maybe he or she is able to understand that what kind of mistake we did. होता है ना ये चीज, मिस्टेक्स को कैसे क्यों हुआ उसको हम एनालाइज करते हैं. तो गैप्स मॉडल्स आर बेसिकली हियर to understand that what mistakes is done by the company to understand the customer and why they are failed. तो इस चीज को दोबारा ना दोहराया जाए, तो इसके लिए गैप्स मॉडल इज द एफिशिएंट टूल टू इंप्रूव द सर्विस क्वालिटी. क्लियर है. तो यहाँ पर आई गेस द टाइम इज ओवर, बट नेक्स्ट क्लास में गैप्स मॉडल बहुत इसको शॉर्टकट में लर्न करने का तरीका मैं बताऊंगी आप लोगों को, कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि बहुत स्लाइड डिफरेंस है सारे गैप्स में, तो आपको कंफ्यूजन ना हो आप लोगों को. तो इसके लिए मैं एक बार इसको अच्छे से करा दूंगी क्लास में विद एग्जांपल्स इज आल्सो देयर. ठीक है, एग्जांपल्स भी हैं इसके साथ साथ, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. आज की क्लास में किसी को कोई डाउट है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है? एनीवन हैव एनी डाउट व्हाटएवर वी स्टडी टुडे? किसी को कुछ पूछना है, समझ नहीं आया?